Hello, welcome to my channel Coded Finger. So in this video, I am going to explain you about the JS objects. Now, what are objects? Objects are the real world objects. Like you can see here, हम जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, like a dog, and she's a student, and this is a car, and this is a book. So all these are actually exist in the real world. So these are all the objects. Now you can see this is a student, she's a girl. Now this is an object और ये object है, इसकी कुछ properties हैं. Like properties क्या हो सकती हैं? It can be the name, class, age, UID number, roll number. So every student is having all these properties, and these properties is also having some values also. ये सब इसकी properties हैं और इसकी value भी होती है. Like name कुछ भी हो सकता है, class कुछ भी हो सकती है, सभी students की होती है. So these are all the properties. Now अब हम इसे JavaScript में कैसे define करते हैं objects को? As I told you, work keyword use करेंगे. Like here I am taking student. ये property है, ये value है, ये property है, value, property, then value. और इसको हम कमा लगाकर separate करते हैं. Now how to assess the object value? This is just a definition. In this way we can define it. ये सिर्फ हम declaration इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको इन objects की values को कैसे assess कर सकते हैं? वैल्यू कैन सी XYZ है, 9 है, 45 है, ये सारी इसकी वैल्यूज हैं. सो इन दिस वे वी कैन डू इट. हम ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट प्रॉपर्टी नेम. नाउ सी हियर स्टूडेंट, एज, एंड इन बिटवीन दिस हमें डॉट ऑपरेटर यूज में लेना पड़ेगा. सो यूजिंग द डॉट ऑपरेटर व्हाट विल हैपन, हम इसकी जो भी वैल्यू है वो असेस कर सकते हैं. बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और इसकी वैल्यू असेस करने के लिए वी आर यूजिंग डॉट ऑपरेटर. नाउ इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. नाउ सिमिलरली जैसे हम लिखते हैं, स्क्रिप्ट के बाद में हमने सेम ही डिफाइन कर दिया. लाइक पर्सन, first name John, age 50. Now document.write, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई. सो प्रॉपर्टी इज एज. बिकॉज document.write से हम जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं स्क्रीन पे वो हम ले सकते हैं वेब पेज पर. नाउ स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. Now you can run it in any web browser and you can see result will come as 50. I hope this is very small concept. You can easily understand this. Thank you. Thanks for watching. Please press the bell icon to get the latest notification from my channel. Thank you.